फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ड्राई क्लीन में स्टार्टिंग करेंगे हेडलाइनर से। तो गाड़ी की जो छत है, हम इसमें 3M का फोमिंग कार इंटीरियर क्लीनर यूज करने वाले हैं। तो ये देखिए आप, तो हमने ये स्प्रे कर दिया है। इसी तरह से हम पूरी गाड़ी में की छत में स्प्रे करेंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाएंगे कि गाड़ी का, जैसे ये ब्लैक आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ड्राइवर साइड में भी और छतों में ऐसे दाग हैं, ये भी हम आपको क्लीन करके दिखाएंगे। तो इसको स्प्रे करने के बाद कुछ देर छोड़ना पड़ता है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको शॉर्टकट में दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने गाड़ी की पूरी आधी छत में ये स्प्रे मार दिया है। अब हम इसको रब करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने ये गाड़ी की आधी छत बिल्कुल वाइट कर दी है 3M के इंटीरियर क्लीनर से। ये देखिए, हमने ये छत क्लियर कर दी। अब आगे ये जो गंदी वाली छत है, ये देखिए अभी कैसी है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए डैशबोर्ड का हाल कैसा काला हो गया है। तो अभी हम इसको चमका देंगे। पूरी बॉडी काली हो गई है, इसको चमकाएंगे, बिल्कुल शोरूम टच देंगे इसको। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें यूज किया है
3M का फोम कार इंटीरियर क्लीनर। तो लगभग 2.5 बोतल अभी तक हमारी ख़त्म हो गई है। देखते हैं आगे और कितनी बोतलें लगती हैं।